So guys, let's start with LAN. Last time I have explained about some MAC address and other details. So today let's start with network types. So yesterday I've explained about network types, like we have different types of network. One of them is your LAN, local area network. LAN is your local area network. So how LAN look like? LAN basically look like this. I've already explained, like if we have an office or building where we connected multiple computers, so we called it LAN. So particular office, institution, building where we connected devices and sharing resources, so that can be our local area network. And range of this LAN is 1 kilometer. 1 किलोमीटर तक आपकी रेंज होती है. इसमें नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं, लेट्स से this is a particular building or institution where I have 5 machines, A, B, C, D and E. So guys, this is your LAN network. LAN basically to cover a small geographical area, and ideal range of LAN is 1 kilometer. So 1 kilometer network is your LAN if I do connect all devices locally. So if I do share anything from B, so locally these devices can do access. So in general, we only do have two kind of network, LAN and WAN. In general, we only have two types of network, or two kind of network you can say. First is your LAN and your WAN. But when we do understand the types of network, so there is other categories also, like LAN, CAN is also there. We can further categorize network into CAN, campus area network. Campus area network is kind of network where we grouped multiple LANs together. So let's say this is my LAN. This is my LAN 1. हाँ? उनका join अभी आया नहीं. So LAN having multiple machines. Let's say 1, 2, 3, 4, 5. This is my LAN A. This is my LAN B. So guys, LAN is basically your local area network. And when we grouped multiple LANs together, जब हम ढेर सारे LANs को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? CAN, campus area network. Let's suppose a university network. So university have a different departments, correct? Yes. And within campus we have small size of LANs. So when we grouped all LANs together, so we get it a network, which we called campus area network. Campus network बोल सकते हो इसको कि एक जहां पर multiple LANs हमने मिला दिए, तो वो मेरा एक क्या बन जाएगा? LAN. LAN को मिलाकर आप क्या बना लोगे? campus area network, CAN. All right. But guys, in general, again, I'm saying in real time scenarios, we only do use LAN and WAN. There is as such no CAN and all. So we have LAN and CAN. In very similar way, if I do talk about further, campus area network, ideally people says like it is having 5 kilometer range. मेल भी दे दूंगा अभी, ले लेना. हाँ हाँ अभी दे देता हूँ, 5 मिनट रुको. Pankaj, can you hear me? So guys, LAN, we discuss about LAN. हमने देखा LAN as well
कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके बाद जो एक और नेटवर्क आता है, पंकज आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है सर। हाँ जी, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए अगर आपको करना है तो। When we connect two cities, or when we do connect two cities, or when we try to communicate between two cities, so such network we call metropolitan area network. Communication between cities, or it can also be like that. When we grouped multiple can, so it's become man. See, it is like this. When we grouped lengths, so we get can. When we grouped can, जब हम कैन को मिला देते हैं कैंपस ए नेटवर्क को, सो क्या बन जाता है? मैन. विद इन सिटी we get LAN as well, can also. So let's say if I do try to connect two cities, Delhi and Haryana, so it is your kind of CAN network, MAN network, metropolitan network. So the range of MAN is 100 kilometer. Ideally, if someone asking about the range for metropolitan area, so the geographical range of MAN is 100 kilometer. So let's say if you are using kind of connection which is having 100 kilometer or in between 100 kilometers, so that we called it metropolitan area network. So the next thing which come here, that is your WAN, wide area network. WAN. So guys, WAN is your kind of network which cover whole world, or you can say communication across the globe. Communication across the globe, we called it WAN or wide area network. Communication across the globe. Globally, let's say if you are trying to communicate globally, and you have, let's say, two computer, one is here in India and another is in New York, so you want to connect these two machines. So B is far away from A, it is in India and it is in New York. So if you want to connect these two machines, so such network we called it WAN, communication across the globe. So guys, we cannot connect via cable. I cannot use my dedicated cable to connect this. So the best example of WAN is internet. Internet is already spanned over a country, or you can say across the globe. So via internet line, we can connect these two machines. So such network we called wide area network, or you can say when we do talk about this wide area network or WAN, so it do cover a good range. So if someone connecting above 100 kilometer, so such network we called WAN. अगर मैं 100 से ऊपर
100 किलोमीटर से ऊपर कोई भी नेटवर्क बना रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा किस में आएगा? वैन में. So such network we called it WAN, wide area network. Wide area network will cover a good range. Above 100 kilometer, if I do try to connect machines, so that we called it WAN. Guys, again I am saying, in real time we only have LAN and WAN. All right, या तो आपके पास LAN होगा या WAN होगा. फर्दर आपको एज सच कोई कैटेगराइजेशन नहीं मिलेगा. बट हमारे पास क्या है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं. लैन, कैन, मैन, वैन. कैंपस बता दिया मैंने आपको, मैन बता दिया, वैन वाइड एरिया नेटवर्क. देयर इज अनदर काइंड ऑफ नेटवर्क विच इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क. Let's say I'm trying to connect two mobile phones, personal stuffs. So this is my mobile 1 and this is my mobile 2. And for communication, I'm using Bluetooth. So hardly Bluetooth having a range which is 10 meter, or it is around 30 feet. So such network we call PAN or personal area network. Very limited, very short range communication जो होगा वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएगा. लेट्स से आई एम ट्राइंग टू शेयर वन song from mobile 1 to mobile 2 via Bluetooth. So such communication we called personal area network or PAN. So in this case, our two devices connecting, but range is quite short, very limited range. So if I try to connect my personal stuffs and range is very limited, so such network we called it personal area network. After PAN, there is another kind of network, SAN, storage area network. So storage area network is like, let's say we have two sites, sites A and site B. Let's say this is bank network. This is my bank head office. And head office connected with branch office. And head office further connected to corporate office. And this is my branch 1, branch 2, branch 3. So let's say if I'm running my storage area network, so whatever the data I do save here in branch office 1, it do get saved on my head office as well. Let's say I've saved one data, which is D1. The copy of D1 gets saved to here on head office as well corporate office. So the advantage is that, let's say if I lose my data from branch office, so I can do recover from two locations. Means I can do recover my data from head office as well branch office. So such storage area network or storage network basically do provide data redundancy. So let's say if I lose my data, if I lost my data from any particular place, so I can do recover from other locations. So that's basically the advantage. And technology we use for storage area network, that is RAD, redundant array in expansion of disk. In case of storage area network, we have like disk or hard disk wastage. The same data I'm saving here as well, here also. So the same data I'm storing in 3 disks.
So here it's kind of wastage of disk also. But the advantage is that if I lose my data from one disk, so I can do recover from next two disks, which is at my other locations. Or storage area network can be like this also. I'm saving my data to my local computer as well on cloud. So let's say if I lose my data from my local computer, so I can do recover the same data from cloud as well. So that is also example of SAN. So guys, now we completed the types of network. इसमें किसी कोई दिक्कत है आप लोगों को? Anyone have any concern? Like आपको कुछ समझ ना आया हो types of network or something? Praveen, do you Sir, understand? all good, sir. I understand. Okay, okay, all right. Pankaj, did you get it? Yes, sir. Okay, so guys, this is the type of network. Now, before starting anything, now today we have to start the IP addressing and fundamentals of IP. In last session, I have described about the MAC address. Today we have to understand the IP address, the detailed structure of IP address and all. So the IP address is very important topic. So first we do start with IP version 4. Then we'll move into version 6. So here we have to cover the IP classes and everything. Then we have to understand the subnetting and all. हमें उसके बाद सबनेटिंग वगैरह और सारी चीजें देखनी है. पहले हमें आईपी वर्जन 4 पढ़ना है. इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4. IP basically we have two versions of IP address. IP address was discovered by your INA. INA is an organization which is Internet Assigning Number Authority. So let's talk about the fundamental first. IP version 4 fundamentals. IP version 4 basically having 32 bits. IP version 4 में 32 bits होंगी. 32 bit address. Means total computer or total devices which we can connect, that is 2 raised power 32, which is approx 4.3 billion addresses. मतलब अगर मैं टोटल IPv4 एड्रेसेस की बात करूं तो आई कैन डू कनेक्ट 4.3 बिलियन एड्रेसेस या 4.3 बिलियन एड्रेसेस टोटल बनेंगे इससे. 2 की पावर 32 आप कैलकुलेट करोगे तो. IPv4 सपोर्ट्स डेसिमल नंबर सिस्टम. Decimal number system which is 0 to 9. IPv4 address look like this. 10 10 10 10 मैंने ऐसे लिख दिया. So this is example of IPv4 address. So this first 10 we called it first octet number. This 10 we called it first octet number. Octet number means what? Each IPv4 address do consist 4 octets. मतलब हर एक IPv4 address में क्या होंगे? 4 octets होंगे. Octets क्या है? I'll do explain.
Octet means having 8 bits. So 10 is my first octet. This is my second. 1 is my third. And 20 is my fourth. 1, 2, 3, 4. We have 4 octets. Guys, but here whatever we do mention dot, so we called it dotted decimal notation. This is my dotted decimal notation. So this dot represent like, this dot is basically to separate the octets. If I mention 10 dot, it means I'm separating, I'm trying to segregate one octet from other. एक ऑक्टेट को दूसरे से अलग करने के लिए मैं क्या लगा रहा हूं, यहां पर डॉट लगा रहा हूं. तो डॉट के पहले मान लीजिए ये आ रहा, तो ये आपका पहला ऑक्टेट हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा और ये चौथा फोर्थ. तो एक एड्रेस में 4 ऑक्टेट होंगे. एन ऑक्टेट मींस combination of 8 bits. Octet means combination of 8 bits, or you can say octet का मतलब होता है 8 बिटों से मिलकर बनाना कुछ भी. For example, the same address मैंने एक लिखा 10.1.1.1.20. So this is my first octet. ये मेरा सेकेंड हो गया, ये मेरा थर्ड हो गया, ये मेरा फोर्थ हो गया. IPv4 ऑक्टेट वैल्यूज. IPv4 में जो ऑक्टेट वैल्यूज होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी. पहला आपका आ जाएगा 2 की पावर में देखते हैं पहले. 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 6, 7. ऑक्टेट मीन्स 8 बिट वैल्यू. तो जो 8 बिट वैल्यूज बनेंगे वो ऐसे बनेंगे. 2 की पावर 0 विच इज 1, 2 की पावर 2 which is 2, 2 to the power 4 which is 2 to the power 2 which is 4, 2 to the power 3 which is 8, 2 to the power 4 which is 16, 2 to the power 5 which is 32, 64, 128. मतलब एक ऑक्टेट में कुछ वैल्यूज इस तरीके से हो सकती हैं. 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन लुक लाइक दिस. लेट्स से you want to convert this फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू इनटू ऑक्टेट फॉर्मेट. सो देखो ऑक्टेट फॉर्मेट में करने के लिए आपको क्या करना है, विच एवर नंबर वी यूज बिलो दैट नंबर वी यूज 1, अदरवाइज वी यूज 0. लेट्स से आई वांट टू फॉर्म 10, मुझे 10 बनाना है, तो मैं 128 तो यूज नहीं करूंगा, 0. आई एम नॉट गोना यूज 64, आई एम नॉट गोना यूज 32, आई एम नॉट गोना यूज 16, but I'm gonna use 8, so it should be 1. I'm not gonna use 4, so it should be 0. I'm gonna use 2, so it should be 1 and it should be 0. So number octet value look like this. This is my first octet binary, 8 bit combination. So I've already explained like 8 bit value और 8 बिट कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट. तो जस्ट टू सिंप्लीफाई आईपी वर्जन 4 वी राइट इन डेसिमल नंबर सिस्टम. जस्ट टू सिंप्लीफाई वैल्यूज वी यूज डेसिमल नंबर सिस्टम. हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक अंडरस्टैंड. अगेन देयर इज 10, अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 0 1 0. So this is my second octet. Now it's become very easy to understand why we called it octet, because it is having 8 bits. Again there is 1. So अगर मुझे 1 बनाना है बाइनरी का तो क्या करना पड़ेगा, we do not have to use any number except 1. So this table, this 8 bit value will help out in order to convert. कभी भी आपको कन्वर्जन करना है, you just have to remember this value 1 2 4 8 पावर वाली, तो आप तुरंत कन्वर्ट कर लोगे. लेट्स से I have to convert 1 into binary
इन ऑक्टेट फॉर्मेट और बिट्स के फॉर्म में लेना, तो आई कैन डू राइट लाइक दिस 444567 1. So this is my again 8 bits. Guys, let's say you have to convert 20 into binary. तो क्या होगी वैल्यू? सभी लोग कन्वर्ट करिए. Those who connected via online, they can mention answer in chat. Okay. What will be the value for 20 in bits? Bits में क्या वैल्यू होगी 20 की? 20. How we can write 20? Which numbers we have to use? Uh, 01. um, 001 0. So 16 and 4 will vary, which means 00010 100, correct? Yes, correct. So 16 and 4 we just have to use. Yeah. Yes, it is the same. Okay. पंकज आपका आया? Yes, sir. सेम. Yes, अरे sir. मतलब Same. बनाना है तो आप क्या करोगे? बस छोटा सा याद रखना है, जिस नंबर को यूज करोगे उसके नीचे क्या रखना है? 1. 1. और जिनको नहीं यूज करना है उसको हम 0 कर 0. लेंगे. तो मान लीजिए मुझे 20 बनाना है, 20 बनाना है, मुझे 20 कैसे बना सकता हूँ इन नंबर से मिलकर? देखो अलग से कोई नंबर नहीं लेना है, जो यहाँ पर लिखे गए नंबर हैं दैट ओनली यू हैव टू यूज. मेरे पास नंबर ही क्या है? 128 64 32 16 8 4 2 1. तो मतलब मुझे इन्हीं नंबर्स को यूज करके बनाना है. कोई और नंबर लूंगा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्टेट को ही फुलफिल कर पा रहे. यही नंबर है जो ऑक्टेट वैल्यू में आएंगे. यू कांट यूज एनी अदर नंबर. सो अगर मुझे 20 बनाना है तो मैं 20 के लिए क्या यूज करूंगा? 16 और 4. 4. पहले आप उन नंबर्स को लिखो जिनसे आपकी वैल्यू बन रही है, देन आफ्टर यू कैन यूज जीरोस. 0. उसके बाद जो जो नंबर नहीं यूज करे वहां 0 लिख दो. अब भी कोई दिक्कत है बनाने में? नहीं सर. आई थिंक अब नहीं होनी चाहिए. तो आपने ये बनाया 0 1 0 1 0 0. So this is my fourth octet, which is also having 8 bits. So guys, now it's proved we have 32 bits in IPv4. देखिए 888 सबको ऐड कर लिया, ये कितना हो गया? Now it's become easy to understand like IPv. If someone's saying like how you can prove IPv4 addresses having 32 bits, so you can simply convert into binary in form of octet. After then you can make it. After then you can make it understand to anyone like how it is 32 bit. So because each number having 8-bit combination, and when we do convert into binary, so we get 8 binary numbers, and those binary numbers we can use for conversion. So it is your 32-bit address. Another example, see these things very important for IPv4 addressing. अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो आगे आपको जो क्वेश्चंस आएंगे IPv4 में, like abhi we are just moving slowly and gradually. Once we understand the basic concept, we have to move on advanced concept of IPv4. So I'll do give you question from online. If anyone asks any question regarding IPv4, any kind of like IP subnetting, IP network classes ABC, any question you can easily give answer if you understand and follow these things which I am explaining here. कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछता है रैंडमली इंटरनेट से इधर से उधर से, आप सारा सॉल्व कर लोगे एंड इन वेरी क्विक टाइम एज वेल. आईपी सबनेटिंग क्वेश्चंस एवरीथिंग आप, मैं आपको ऑनलाइन भी क्वेश्चन रैंडम कहीं से भी सॉल्व कराऊंगा, देन आपको पता चल जाएगा कि यस
I can do it. So first we have to understand the basic. Ki like IPv4 having octets, and octets means 8 bits combination. जब भी IP लिखा होता है वो डेसिमल में लिखा होता है, लेकिन आप उसको एक्चुअली देखोगे कैसे, एज ए ऑक्टेट. सो फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड ऑक्टेट मींस 8 बिट वैल्यू. So 8 bit values जब मैं start करूंगा, when I do start, so I'll do right like this. When I do start from right side, it should be 1, and left side it should be 128. So 1 2 4 8 डबल करते जाओ बस, आपको याद भी नहीं करना. 64 and 128. Let's say मैंने एक आपको नंबर दिया again 192.168 10.20. You have to convert into binary. Guys, आप लोग convert करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है इसका. Then we'll move into next. Okay. It is all to add and check, to add and check the values. Okay. Right. So, So it should be one dot one dot zero dot zero dot zero dot zero. Then one dot zero dot one dot. I have put it in chat. Okay. 192. Yeah, 190 should be one dot one dot. Yes, first two bits 192 and 168. 192 32. Yeah. 128 plus 32, which is 160. There should be That- 8 also. So second number is wrong. First is correct. second one is, I think, wrong, sir. Second one. Yes. Third is correct. Yeah. Fourth is correct. Fourth is correct. Your second one is wrong. Okay. Yeah, it should Second be one actually 120. the requirement is 168. So See, it should be like this. देखो आपके पास नंबर क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ जल्दी कैसे निकलेगा. You can think like that. मान लीजिए आपके पास नंबर यही है ना, 164 128 64 32. You have 16 8 4 2 1. You have these 8 numbers. Let's suppose you want to make it 192. So 192 will automatically have 128, क्योंकि this is the highest number and जो value आपको बनानी है that is all higher than octet value. So 128 should be there, and now you have to think like how we can make rest things. So 192 plus 64, when you do add, so it's become 192. So rest value should be 0 0. okay. Correct? Yeah. Now 168. Let's say you want to make it 168. So for 168, there should be 128 32. 128 plus 32, which is 32, 160 Plus 8. plus 8 Yeah. and 0 0. Rest number should be 0 because इसी से मेरा क्या बन जाएगा 168. Now again 10 we already done many times. So 0 0 0 1 0 1 0. All right. 20 we already used last time. So 0 0 0 16 0 1 00. So this is the binary conversion. Right. Correct? Yeah, correct, sir. किसी को दिक्कत है?
आगे बढ़े, आपको आगे। Guys, now next concern, like IPv4 address basically divided in 5 classes. IPv4 address में आपके पास 5 classes हैं. There is 5 classes. IPv4 को 5 classes में divide किया गया है. First आपकी class है class A, class B, class C, class D and class E. A to C classes we use only in LAN and WAN. LAN और WAN में जो हम communication कराते हैं वो हम कहाँ use करते हैं? A to C classes को use करते हैं. D and E we use for a special purpose. So first we have to understand range of IPv4 address. So let's say here I'm gonna do write range. So 0 to 127 is the range for class A and valid range is 1 to 126. Class B range is 128 to 191. This is class B range. Valid range is 128.0.0.1 to 191.255.255.254. ये मेरी वैलिड रेंज क्लास बी की होगी. क्लास सी 192 टू 223, ये आपकी क्लास सी की रेंज होगी. एंड ये आपकी क्लास सी की रेंज होगी. एंड क्लास डी रेंज इज 224 टू 239. दिस इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग. 240 to 255. This is for research and scientific purpose. Scientific and research purpose. So guys, we have 3 classes which we use in LAN and WAN, and we have 2 special classes. One is class D जिसको मैं मल्टीकास्टिंग में यूज करता हूं, और E मेरी क्या रिजर्व है IPv4 के अंदर. IPv4 addresses divided into 5 classes A, B, C. A to C classes we use for LAN and WAN. D and E reserved for multicasting and scientific and research purpose. All right. Now we have to understand the details. हर एक क्लास की हमें डिटेल समझनी है. लेट्स सपोज मान लेते हैं लेट्स से कि आपके पास क्या है. Let's say you have multiple IP addresses. First, you have to understand like how we do exactly understand whether it is class A, B or C. कैसे आप पहचानोगे कौन से क्लास का IP है ये. फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए. Let's say you have n number of random IPs, and now you have to recognize. Guys, I have already explained like class A range is 0 to 127. B range is 128 to 191. C range is 192 to 223. मान लीजिए अगर आपको एड्रेसेस इस तरीके से दिए हैं, लेट्स सपोज वी हैव एड्रेसेस लाइक दिस, एंड you have to identify the class
whether it is A, B or C. So in order to identify class of IP address, you always have to check first octet value. आपको क्या चेक करना है? First octet value ही चेक करना है. Rest 3 octet we do not have to check. Classes को identify करने के लिए हमेशा हमें क्या देखना है? First octet value, and we have to compare with this IP range. मुझे यहाँ जो रेंज दिख रही है इससे कंपेयर करना है. Let's say someone gave me n number of IPs, and person told me like you just have to identify the class. So in order to identify the class, we just have to verify the first octet value. If first octet value lie in between A, so it should be class A. If it's lie in between B, so it should be class B. So if I do check first number of first IP, अगर मैं फर्स्ट नंबर देखता हूं पहले आईपी का, तो यहाँ क्या आ रहा है? 192. सो ये कौन से क्लास का आईपी होगा गाइस? क्लास सी. ऑफ कोर्स इट्स क्लास सी, क्योंकि नंबर आपको ये दिख रहा है रेंज से. सो पहले आपको बेसिक आना चाहिए यार कौन से क्लास का आईपी है ए बी सी. इफ देयर इज नंबर 110, सो यू कैन सिंपली से इट इज क्लास ए. If it is 171, so as per my IP range, it is class B. You don't have to focus on these three numbers. उससे कोई मतलब नहीं होगा कभी भी क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए. हमेशा आपको पहले ऑक्टेट के जो नंबर्स हैं उन्हीं को देखना है. मैंने यहाँ सी लिख दिया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कौन सी क्लास है? बी. एंड अगेन इट्स बी. सो सबसे पहले मान लो आईपी एड्रेस लिखा है, कोई बोल रहा है यार ये इस क्लास का आईपी है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कौन से क्लास का आईपी है. आपको पता नहीं चल रहा है क्या लिखा गया है. सो पहले तो आपको क्या आना चाहिए? फंडामेंटल्स की. यू शुड अंडरस्टैंड वेदर इट इज ए बी सी और डी क्लास. कौन सी क्लास का आईपी है यू शुड नो. सो इट्स क्लास डी अगेन, क्लास सी. लेट्स से मैंने ये लिखा, सो इट इज आल्सो क्लास सी. सो क्लासेस आइडेंटिफाई करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ क्लास ए. क्लास ए की डिटेल्स क्या है वो हम समझते हैं. See guys, class A range is 0 to 127. Valid range is if I do write like this in octet format, so it is always B. So this is the range. हर एक क्लास के साथ सबनेट मास्क भी हम यूज करते हैं. With every class we use subnet mask. Subnet mask basically look like this. क्लास ए का सबनेट मास्क मेरा क्या? 255.0.0.5, 255.0.0.0.0, 255.0.0. That's class A subnet mask. So guys, the very first question, what is subnet mask? So the answer is subnet mask
सबनेट मास्क डिफाइंस द नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस। सबनेट मास्क क्या डिफाइन करता है? नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन किसी भी आईपी एड्रेस का। और इन सिंपली वी कैन से, और ज्यादा सिंप्लीफाई अगर मैं सबनेट मास्क को करूं, सबनेट मास्क डिफाइन ऑन बिट्स और ऑफ बिट्स। ऑन बिट्स रिप्रेजेंट्स नेटवर्क, ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट होस्ट। लेट्स सपोज क्लास ए का आपके पास क्या है? एक सबनेट मास्क है विच इज 255। गाइज दिस इज वी कॉल डिफॉल्ट सबनेट मास्क। ये मेरा क्या डिफॉल्ट। इफ आई डू कन्वर्ट 255 इंटू बाइनरी, अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, लेट्स फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। अब अगेन फिर बाइनरी आ गया। अब आपको वो टेबल हमेशा ही याद होनी चाहिए, नहीं तो कन्वर्ट नहीं होगा आपसे। तो 1 2 4 8 64 32 64 128। लेट्स सपोज मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ दीज 8 बिट्स। मुझे 8 बिट्स का सम निकालना है। So guys, instead of adding each number like this 1 2 4 मैं add करूं, I can use one trick. If I ask like which one is the highest number, so you must say 128. Correct? Highest number क्या आ रहा है? 128. 128 से पहले क्या आता है? 127. So if you add 128 plus 127, so you get sum of 8 bit. In similar way, if I ask do sum of first 5 bits, सम निकालो फर्स्ट 5 बिट्स का। सो अगेन यू गाइज कैन डू वन थिंग, कैन डू एड ईच नंबर। ऐड करोगे इस तरीके से आएगी वैल्यू, लेकिन अब आपको ये ऐसे नहीं करना, जो मैंने बताया वो करना है। यू हैव टू जस्ट चेक हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें? इसमें जो आपके पास हाईएस्ट नंबर है दैट इज 32। 32 से पहले क्या आता है? 31। सो यू गॉट द सम ऑफ फर्स्ट 5 बिट्स। If I ask again the sum of value of first 6 bit, क्या आएगा? 128 आएगा? 127? 127 आएगा ना। करेक्ट। तो सम आप इस तरीके से निकाल सकते हो। सो अगर आप देखो इन सब नंबर को जोड़ोगे, सम ऑफ 8 बिट्स विच इज 255। मतलब अगर मुझे कहीं बाइनरी निकालना है 255 की, तो मैं अब हमेशा क्या लिख सकता हूँ? ऑल नंबर शुड बी 1 1। एंड जितने भी नंबर 1 1 है दैट वी कॉल्ड ऑन बिट्स।
एंड रेस्ट नंबर हमारे क्या होंगे, ऑफ बिट्स. This is my network bit and these are all host bits. So guys, the sum of 8 bit is 255. So it means मैं कह सकता हूँ IP वर्जन 4 में कभी ऐसे नंबर होंगे ही नहीं. 300 नहीं होगा. 400 कहीं पे लिखा हुआ IP वर्जन 4 में, that is wrong. 260 is also wrong because there is only possible sum of 8 bit is 255. तो मैं एक IPv4 नंबर में मैक्सिमम क्या यूज कर सकता हूँ, 255 ही यूज कर सकता हूँ एज ए सम, और कोई नंबर में यूज नहीं कर सकता. Everyone does understand this concept, why we are using only Yes. why we are using only 8 bits, and 8 bits combination sum of 8 bit is 255. मतलब अगर आप 8 बिटों का सम करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 255 आएगा. तो अगर मैं 255 का बाइनरी निकालूंगा तो उसको ऐड करने का मेथड भी मैंने आपको बता दिया. यू ऑलवेज हैव टू ऐड विथ highest number, and just before highest number value you have to add, you get the sum of that bit. Similarly, you can try this on first three numbers. If you do add first three number, you get 7, and if you do check highest number, so 4 plus 3 is equal to 7. Correct? यहाँ पे भी आपको ये सेम ही आ रहा है. तो अगर आप देखो ध्यान से, आपके पास क्या है यहाँ पर, in case of class A we have network bits which is 8. Means we can use network bit to calculate network. So formula to calculate network is 2 raised to the power n minus priority bits. Priority bits क्या होती हैं, we'll discuss. So 2 raised to the power n, which is 2 raised to the power 8 minus 1. Default priority bits PB is equal to 1 for class A. So it's become 2 raised to the power 7. It means 128. Means I can create 128 networks in class A. So guys, subnet mask will define network bits, and network bits define number of networks which we can use in particular class or IP. Similarly, we have host bit also. Eight, 24. 24 bits we have. So it means we can use 2 raised to the power 24 host or users. Means we can connect 2 raised to the power 24 users. And host calculation formula is 2 raised to the power h minus 2. It is in base. So if I do put value, host bit 24 minus 2. So 16777516 minus 2. 16777214. These number of machines we can add in case of class A. So host bit define number of users or number of machines which we can connect in particular class. Let me just check the value of 2 raised to the power 24.
x power y. One six triple seven two one six minus 2 16777 So means these number of hosts we can use in case of क्लास ए. अगर मैं क्लास ए का आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूं तो उस आईपी एड्रेस में कितने यूजर्स कनेक्ट कर सकता हूं, इतने. और वो कौन बता रहा है मुझे, उसका सबनेट मास्क. सो सबनेट मास्क इज यूज टू कंट्रोल नंबर ऑफ नेटवर्क एंड होस्ट. नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे और कितने उसमें यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं, दैट वी आर कंट्रोलिंग बेस्ड ऑन सबनेट मास्क. सो टू कंट्रोल, सी आईपी एड्रेस से मैं बनाऊंगा ही क्या, या तो नेटवर्क बनाऊंगा या क्या बनाऊंगा, होस्ट और यूजर्स. द बेसिक पर्पस ऑफ आईपी एड्रेस इज टू यूज नेटवर्क और होस्ट सिंपली. सो नेटवर्क या होस्ट बनाने का जो लॉजिक ही है पूरा, वो क्या है कि आप हमेशा क्या बनाओगे, नेटवर्क एंड होस्ट. और नेटवर्क एंड होस्ट के बेसिस पे आप क्या डिफाइन करोगे, अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप मतलब यूज कर सकते हो नंबर ऑफ नेटवर्क. बट हियर we are using default subnet mask, and on the basis of default subnet mask we can calculate 128 network and this number of host. So guys, for today we do only perform this till class A calculation. In next session we'll do complete A, B, C calculation also. I'm going to show you the notes of each session, like जो भी मैंने calculation किया I can show you. Yesterday notes, MAC address and all. And IPv4, it is a unique logical identification number that is used to communicate over the network. It is 32-bit address, 4.3 billion addresses total. It supports decimal number system, each octet having 4 octets. For example, 10.1.1.0. Now come to the next example. Octet possible values are like this: 124826. 8-bit sum is 255. IPv4 have 5 classes: A, B, C. Range is this, valid range is this. Subnet mask of class A, default subnet mask 255.0.0. When you convert into binary, it look like this. 11 shows number of network bits and 00 shows host bit, or you can say user bits, because it allowed to connect users. Formula to calculate number of host, which is 2 to the power h minus 2 to the power 24 minus 2, and value we get this. To calculate number of network, we have to use 2 to the power n minus priority bits, 2 to the power n, which is 8 minus 1, so 2 to the power 7, which is 128. Similarly, for class B and class C, you get all these things. So in that order, we have to move gradually. So guys, I'm going to share all these notes with you guys in a chat, so you all can download it day by day notes. I have just shared day 1, day 2, and also sharing some basic PPT. Basics of networking and routing. That is one fundamental PPT which you guys can use. So you all can download it and just go through with all these two PPTs, day 1 and day 2, and the fundamental one. Then tomorrow we'll do understand class B and C and some more calculation about IP. We have to go very in depth about IPv4. Then we have to move into IPv6. I hope everyone understand till whatever we discuss here. Anyone have any concern? I think it's very easy till. Yeah. Yes, Praveen.
You were saying something. No, sir. All good. It's very clear. So it's class A, B, C we have to discuss. So first I have explained only about class A, the range of class A, how we can identify IP version 4 addresses on the behalf of first octet number. We can identify whether it is A, B, C. And the very important thing, we have to understand the logic, how we do calculate these things. So that I'll do explain in tomorrow. But I will only explain you about class A. Class A having subnet mask which is 254.0.0 which is default, and having network bits and host bit. Network bit define like how many networks we can configure with class A, and host bit define how many users we can connect. It is like this. If you are not getting still, so I'll do make you understand. Let's say you have three networks, and here we have 5 users, 1 2 3 4 5. So this is my network number 1 2 3. So in very similar way, if you are using class A IP address, you can create 128 networks, and the number of machines which you can use in network, that is 2 to the power 24 minus 2. So class A basically we use for large number of host requirement, where we have like n number of requirements and or quite big organization having very good number of employees. So in that case we can use class A IP address. So class A IP address always have large number of hosts, and number of networks are quite less, like 128 networks we can do create with the help of class A. So only these things we understand today. Everyone download the documents which I've shared. Yes, sir. Yes. Okay. So guys, I'm closing the session. Tomorrow we'll do meet at same time. Okay. Thank you, sir.